सर एक सेकेंड बस. क्या कर रहे हैं? हाँ, सर वो ट्राई कर रहा था, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं. सर नहीं हो रहा था. which series are you trying? सॉरी सर, विच. How are you trying to do it? कैसे कर रहे हो? सर कौन वो सा सीरीज के साथ ट्राई कर रहे हो कंपेयर करना? UN is this. bn अपॉन bn स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कर रहा था, लेकिन उसका पता ही नहीं चल रहा वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज. तुम VN क्या ले रहे हो? VN क्या है? bn अपॉन bn स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना है. You have to take series which are simple like n power something or r power n. सिंपल सीरीज लेना है. कोई एक सिंपल सीरीज चूज करो ताकि यू कैन कंपेयर एंड फाइंड लिमिट एटलीस्ट इजीली. ओके सर. उतना कॉम्प्लिकेटेड लोगे तो इसी का पता नहीं चलेगा तो फिर कैसे करोगे? वही वही उसका ही नहीं पता चल रहा. ऐसा सिंपल सीरीज चुनना है जिसका वी नो कन्वर्जेंस ऑब्वियसली. कौन सा चुने हो सीरीज? और फिर 1/n चुना. 1/n इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? सर 1/n इज डाइवर्जिंग. सो देन कंपेयर फाइंड दिस लिमिट. हाँ, तो सर लिमिट निकाला तो फिर वो b जो होता है न्यूमरेटर में आ जाएगा bn स्क्वायर माइनस a स्क्वायर n.
अपॉन बी एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लिमिट आएगी इसकी 1। तो सेम ही होगा, जो सा वो कर रहा है वैसा ही वो बिहेवियर करेगा, So this is also diverging. डाइवर्जिंग। Okay. Next one is this one. सर ये वाला हो गया था शायद। What is the answer? सर आंसर आ रहा है डाइवर्जिंग। Why diverging? सर इसमें क्या किया, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करा, Mm-hmm. तो फिर ये बन जाएगा रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो फिर सर इसका एस एन निकाला आप, Mm-hmm. एस एन निकाला तो वो आएगा रूट एन प्लस वन माइनस वन। Mm. फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन किया, Mm. तो वो आएगा इन्फिनिटी को जाएगा, तो डाइवर्जिंग हो जाएगा। So it is not finite, it's not bounded. हम्म, If you wanted to do this by any other method, can you compare it with some other series and also find it? ओके सर, आई विल ट्राई। You can compare it with this one, root n plus root n, which is 1 by 2 root n. सर वो पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? You cannot see the screen. नहीं मतलब स्क्रीन दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा, जो आपने राइट हैंड साइड में लिखा वो पूरा नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा, सिर्फ कुछ बस रूट ही दिख रहा है। अब दिख रहा है। Take Vn as 1 by root n plus root n, or 1 by 2 root n. ओके सर, तो फिर करता हूँ। So if you think of 1 by root n, ये series is diverging or converging? 1 बाय रूट एन, Hmm? तो सर ये तो एन टू दी पावर हाफ है, तो फिर ये डाइवर्ज करनी चाहिए। It diverges because power is less than 1. हाँ, पावर इज लेस देन 1 तो डाइवर्ज करेगी, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से तो कुछ होता नहीं है। So find limit n tends to infinity un by vn. ओके सर, निकाल। टेन वन आ रहा है सर। So 1 आ रहा है, so मतलब इसका मतलब सर वो वीएन डाइवर्ज कर रहा है तो वो भी डाइवर्ज करेगा। there are two ways in which you could have done this, right? राइट। Fourth one is this one, un is root over n by n power 4 plus 2. You have to find whether this series converges or diverges.
Again, you have to take some simple series on the हाँ other सर, side. 1/√n ले सकते हैं. Which one? 1/√n. हाँ सर, एक बार कर लेता हूँ फिर बता दूँ. Hmm. 1. सर 1/n⁻³ ले सकते हैं. Because that would be an easy series. Limit can be easily calculated then. हाँ तभी कैलकुलेट. Basically, if you take it like this, it is 1/n⁻³ This is clearly converging. So then you can find limit n tends to infinity un/vn. 1 आएगा वो. Then this means this also converges. Right? सर बाकी एक बार ट्राई करूँ, अगर नहीं हुए तो फिर अगली क्लास में पूछ लूँगा. No, अभी ही करना है सब. अभी बताओ. ठीक है. Fifth one is this series 1 plus 1/2 square plus 1/3 cube.
एक मिनट सर। सर एक मिनट। सर एक सीरीज सोच सकते हैं जैसे 1+1/2² +1/3² +1/4²। तो वो कन्वर्ज करेगी 1+1/2 2² 1/3²। basically 1/n². राइट सर। You're saying हाँ। this series is convergent, so सर ये वाली सीरीज है जो हमने जो चूज करी है, हमने बनाई है, वो इससे बड़ी है। बड़ी तो फिर कैसे कुछ पता चलेगा? Well, this is bigger. You are saying each term of this is smaller than this, यस सर। right? So if this is converging, then this also has to converge. हाँ सर, तो छोटा वाले को भी कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो This is the comparison test. If you have two series un vn converges and every term every term of un is less than term of vn, then un will also converge. हाँ सर, यही सोच। सही नहीं है सर। Then the next one is summation from n is equal to 2 to infinity 1/n² log n. सर वो समय 1/√n नहीं था? 1/√n², हाँ वो भी था। कौन सा करना है पहले? This one first. ओके। स्क्वायर। तो सर 1/n² ले लेंगे। फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी μn/vn करेंगे।
वो आएगा 1/log n। un by लिमिट en। टेंड्स टू इन्फिनिटी जब ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो फिर क्या पता चल रहा है? If the denominator is converging and the limit is 0, हाँ सर, तो then लिमिट 0 है un तो is also वो converging, हाँ वो भी कन्वर्ज कर देगा। right? राइट सर। Limit, if it was 1, then they have same behavior. If the limit was finite and 0, then denominator अगर converge कर रहा है तो numerator will also converge. राइट सर। Okay, this one then. You have to try to compare it with some known series. हाँ सर वही कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। n factorial और 2 power n में क्या comparison है? 2 power n minus 1, which is bigger? सर n फैक्टोरियल। So after, as soon as n is greater than I think 3 or something, 3 factorial is 6 and this is 4, right? Right. For all n greater than 3, this is bigger. Right. So you can say 1 by n factorial will be smaller than this, right? And you can take root also now. So 1 by root n factorial will be smaller than 1 by 2 power n minus 1 by 2, right? Correct. If you take root, it will still be this, right? Right sir। Now you have to check whether this series converges or diverges. If it converges, then this converges. So
This series write some terms. First term, if you put n is equal to 1, it will be 1 plus n is equal to 2, then it will be 1 by root 2, right? Then if you put n is equal to 3, it will be 3 minus 1, 2 by 2, 1 by 2, n is equal to 4. सर वो उस तरफ का दिख नहीं रहा है. That is a problem with your screen, dude. My screen is fine. I don't know what is happening. Put n is equal to 4, what comes? 2 root 2. So what is this series? दिख ही नहीं. This is a GP with common ratio 1 by root 2, right? Correct. Correct. Common ratio is clearly 1 by root 2. Every term you are multiplying by 1 by root 2. When common ratio is 1 by root 2, 1 by root 2 is less than 1. So therefore, this is a GP that converges. तो वो भी करेगा फिर. So this will also converge. The point is to compare it with something. Here we chose to compare it with this. You could have chosen something else also if you know it. But as long as you get a converging series on the other side and say that the terms here are less than the terms of a converging series. Right? Right. The choice of the other series Vn is up to you, but you could have thought of something else also. This is one way to do it. Next one is this one, summation root over n power 4 plus 1 minus n power 4 minus 1. You can rationalize it first. 2 upon under root n plus n, 2 upon under root n to the power 4 plus 1 plus under root n to the power 4 minus 1. सर फिर कर रहा हूँ बस. तो सर इसमें मैंने Vn 2 upon n square चुन लिया. Vn is 2 upon n square. you can take 1 upon n square भी ले सकते हैं. you can take like this n power 4 plus n power 4, so 2 upon 2n square or 1 upon n square. Right? सर दिख नहीं रहा नीचे का. पता नहीं स्क्रीन की क्या प्रॉब्लम है.
I'm saying Vn can be taken as 1 upon n square. अब हो गया, अब दिख रहा है ये क्या दिख कैसे नहीं रहा है तुमको? सर, अब दिख रहा है, वो कुछ सेटिंग चेंज करी तो अब दिख रहा है पूरा। हाँ सर, यही लिया। 1 अपॉन एन स्क्वायर भी ले सकते हैं, 2 अपॉन एन स्क्वायर भी ले सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। Find the limit. सर जैसे मैंने 2 अपॉन एन स्क्वायर लिया तो लिमिट 1 आई। So तो जैसे कि वो 1 अपॉन एन स्क्वायर है या फिर 2 अपॉन एन स्क्वायर जो भी हम लें वो कन्वर्ज करता है, तो ये भी कन्वर्ज करेगा। find the convergence of whether it converges or not. This one. साइन 1। Hmm. The obvious series to take is 1 by n, right? एक सेकेंड होल्ड कर सकते हैं सर? यस सर। So what is coming for you then? हाँ सर, एक सेकेंड। सर एक सेकेंड। वन आएगा सर। क्या पता चल रहा है फिर इससे? सर जैसे 1 अपॉन एन है तो वो डाइवर्ज करती है सर, इससे तो पर हम कुछ कह नहीं सकते फिर। क्यों? तो सॉरी, नहीं नहीं, मतलब वो डाइवर्ज करती है तो वो डाइवर्ज करेगी, अगर जीरो आता तो कुछ नहीं कह सकते होते। It diverges because it's finite and non-zero, right? राइट सर। If if it comes out as finite and non-zero, then both the series have the same behavior. राइट सर। We have some more tests that you have to learn.
We'll do that tomorrow. Okay, sir. Some more theory is there, then this chapter will be over. Okay, sir. After this infinite series part, normal calculus like continuity, differentiability, integrability, वो सब आता है, mean value theorems and all. हाँ सर, वो आता है, मतलब पढ़ना है पर आता है. Fine, then सर फिर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट करेंगे, उसमें रैंक वैंक और ये सब चीजें करेंगे. fine. Tomorrow will be then last class for the series part. ओके सर. और मतलब सर इसमें भी 2-3 टॉपिक्स हैं वैसे, टेलर सीरीज, पावर सीरीज, वो सब नहीं किया है. We can do that after matrices. आफ्टर मैट्रिसेस या आफ्टर दिस? नहीं, इसमें बहुत चीज है अभी. It's not over, but if you want to do matrices, we can do matrices after tomorrow's class onwards. ओके सर. अभी रियल एनालिसिस खत्म थोड़ी, अभी तो शुरू हुआ है. ठीक है सर. अभी इन्फिनिट सीरीज हुआ, पूरा कैलकुलस तो बचा ही हुआ है. पावर सीरीज वो सब बाद में आता है. पूरा कैलकुलस मतलब समझा नहीं सर. बहुत सारे चीज बचे हुए हैं रियल एनालिसिस में. जस्ट द बिगिनिंग, इन्फिनिट सीरीज पार्ट विल बी ओवर. बट सर सिलेबस में तो मतलब 2-4 चीजें ही हो रहा है. क्या 2-4 चीजें और है? तो रियल एनालिसिस में और क्या क्या है जो सिलेबस में है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पावर हाँ. सीरीज, हम तो पावर सीरीज तो वो तो बात करी आपने, डिस्कस करेंगे बाद में. मीन वैल्यू थ्योरम्स, उस पे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट. मीन वैल्यू थ्योरम्स, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, पावर सीरीज, ये सब टॉपिक्स में टाइम लगेगा. बट we can move to my matrices, determinants, and after that we can do the rest. ओके सर. ओके. हाँ, सीरीज में भी उन्होंने पूछा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन, देखा तो. ठीक है सर. फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का मूव करेंगे. Okay. What time are you free tomorrow? Hello. हेलो. What time are you free tomorrow? सर इसी टाइम, मतलब मैं तो फ्री हूँ कल. The class will be then at 2 p.m. Okay. ओके सर, नो प्रॉब्लम. Fine. Bye.